So in the last discussion, we have understood the basics of Huffman coding. Here, actually, we will understand the algorithm on a very high level. So Huffman algorithm, we have seen that already that it is a prefix-free code. So whatever the code we are generating for every entity, they don't have any prefix, and that it actually helps to understand this algorithm, which is which is lossless algorithm. So you won't find any loss while you are decompressing it. So lossless technique, you can say, and that we have already discussed. And also we have introduced another thing that we are this Huffman code saves or optimize space using variable length coding. Variable length coding means we have understood that every character uh, encoding or number of bit size we have used to encode that character is not going to same for every item. And we have taken an example and try to understand it. So whenever we are considering an algorithm, it will have an input and it will have an output. So in this case, what is going to be the input? So input is basically, if we take a different color, input is basically like the stream. Say for example, the stream is a b b b b c c c dot d d d. So who are the input characters or primary input, unique input characters? Say for example, a, d, b, e, and f. So they are the primary unique input characters, and they have a frequency. So this is basically a frequency map, you can say. So the frequency is say for example having 10, d is having 50 frequency. That means 50 times it has been offered, 20 it has been offered 40 times, and it has been offered 80 times. Right. So that's the number corresponding to these characters. Now this Huffman coding, what does it say? The Huffman coding says that whoever is having highest frequency, so among this, who is having highest frequency, 80 is the highest, which is like 8, is going to have the minimum code. That means the minimum number of length or minimum length of unique characters will be associated with this. So let's take an example. So basically, Huffman code actually creates a binary tree, and it's a full binary tree. Full binary tree means what? Either the child is going to have a 0 node, or it is going to have a 2 nodes. So suppose this is the parent node, and the parent node is basically having 2 child nodes. So let's take some examples. Suppose this is the highest frequency, and ये आपका रूट है, ये आपका रूट है. तो हॉफमैन क्या बोल रहा है? हॉफमैन बोल रहा है कि इसका मिनिमम एनकोडिंग लेंथ होगा. दैट मीन्स ये अगर हम लोग रूट से ट्रैवर्स करेंगे तो किसको मिनिमम और किसको बहुत नजदीक जो है उसको ही बहुत एक्सेसिबल होगा, राइट? So if it is like his highest frequency and Hoffman wants to get that thing so quick, so that means it should be very much closer to the root node. So f is basically residing over here, and what is the frequency? 80. Just write 80. So f is basically frequency, the node which is going to be the leaf node, because all these nodes is going to be the leaf node in this tree data structure, and that is going to happen over here. So next one, so let me draw the Huffman code first, and then I will say like how that is being populated in the next lecture, but we will discuss this tree very much majorly in this data structure in this class. So every root to leaf is going to be Huffman code for a specific node.
So this is the stuff. So here you have the shortest length, right? So that's why basically you will get it very quickly and you will have the less note. Now इसका एक फंडा है, क्या फंडा है कि एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंड जो assumptions है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ. First of all, every node, right, is going to be every leaf node, right? So root to ये एक आप एक समझ सकते हो कि ये एक consideration है कि Huffman कोड कैसे काम करता है. रूट टू लीफ का जो पाथ है वही Huffman कोड को रिप्रेजेंट करेगा. ये दैट इज द थिंग. नाउ एवरी लेफ्ट चाइल्ड लेवल्ड एज 0. सो ये लेवल लेफ्ट चाइल्ड है, तो मैं इसको ना डिफरेंट कलर से लेवल कर रहा हूँ कि ये 0 है. मान लीजिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0. ऑल दीज आर zeros. And every right one is basically 1. So these are 1, these are 1, because this is right child, this is right child, this is right child, this is right child. Fine. So all this has been marked. Now आपका क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट थिंग ये बोल रहा है कि आपका जो जो एलिमेंट्स है वो सभी लीफ एलिमेंट्स होगा. सो ऑल दिस एलिमेंट्स इज गोना बी लीफ एलिमेंट. सो इसके बाद लीफ एलिमेंट कौन कौन है ये मैं थोड़ा मार्क कर लेती हूँ. ये भी लीफ एलिमेंट है, ये भी लीफ एलिमेंट. ये लीफ एलिमेंट नहीं है, ये इंटरनल एलिमेंट है. ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ. तो मान लीजिए ये सारी चीज पे आपका वो वाला कैरेक्टर, ऑल दीज कैरेक्टर्स विल रिसाइड. फाइन. नाउ कौन कौन आएगा ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए. तो पहला जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो सबसे पहले इधर आएगा, और उसके बाद सबसे दूर वाला नोड जो है उसमें आएगा ये वाला चीज जो जिसका लीस्ट फ्रीक्वेंसी है. अभी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है ए और बी का, तो वो तो इस लेयर में आएगा. तो ए कहां पर आएगा, बी कहां पर आएगा, ये हम लोगों को पता होना चाहिए. लेकिन अभी कैसे कैसे हम लोग ये ट्री बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हॉफमैन, इसको हम बोलते हैं क्या, हॉफमैन ट्री. कैसे हम लोग ये हॉफमैन ट्री को बिल्ड कर रहे हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन अभी अभी हम लोग को जो है कि इस ये दोनों में एक्चुअली जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो ये ए और बी इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो यही लॉन्गेस्ट में आएगा ना, है ना. रूट से लॉन्गेस्ट यही तो है. ठीक है. नाउ A will reside over here. Say for example, B are residing over here. So A is having 10, B is having 20. And this is our intermediate. So intermediate node is going to have a character. Say for example, arbitrary character I am taking as dollar. So what is the frequency of intermediate node? 10 plus 20, that is going to be 30. So here another leaf node will come. So 10 और 20 के बाद आ रहा है 40. So definitely 40 will be here. Just trying to understand. And this is a leaf node. This is a proper node. This is not an intermediate node like this. So अगर हम लोग का ये proper node है तो E यहाँ पर आ जा रहा है. Fine. तो 40 प्लस 30 इसका समेशन हो जा रहा है 70. ये एक इंटरमीडिएट नोड है, तो मान लीजिए ये डॉलर है. अब ये एक लीफ नोड है, तो 40 के बाद कौन आ रहा है, 40 हो गया, 10 20 हो गया, इसके बाद आ रहा है 50 और 80. 80 तो इधर है, तो यहाँ पर 50 होगा. तो 50 अगर इधर होगा तो 50 का ये है एफ. और 50 और 70 को अगर हम कर लेते हैं ना एडिशन, तो 120 आ जाएगा. ये भी एक हम लोगों का इंटरमीडिएट नोड है, इसलिए डॉलर. और यहाँ पर जो हम लोगों का इंटरमीडिएट नोड है एट द वेरी टॉप लेवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 120 प्लस 80, दैट इज 200. राइट. तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप डॉलर डाल सकते हो या फिर कुछ और भी डाल सकते हो. नाउ अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कैसा होता है. तो एफ अगर हम लोग मान लें, एफ का कैलकुलेट आप करेंगे 0 हो जाएगा. हेड से कहा, यहाँ पर रूट से हम लोग जा रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं एफ को. तो पाथ क्या है, एक ही पाथ है, उसका वैल्यू क्या है, 0. फाइन. अभी हम लोगों को यहाँ पर तो 2f हो गया, शायद थोड़ा गलती कर दिया हम लोगों ने. 50 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो गया है डी, तो यहाँ पर डी होगा, सॉरी. तो डी का जो कोड है उसको क्या है, उसमें क्या है, उसमें है पहले तो यहाँ पर आना पड़ेगा इंटरमीडिएट नोड पे. तो आफ्टर दैट वी विल कम ओवर हियर. सो 1 and 0. सो जस्ट राइट 1 0. अभी हम लोग को जाना है ई पे. ई पे अगर जाना है तो कहां से कहां तक जाएगा, ई पे अगर जाना है तो 1 1 1 ऐसे जाएगा ना, 1 1 1. अभी हम लोग को जाना है ए पे, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे. तो 1 1 0 0. राइट.
तो हम लोग लिख लेते हैं 1100। उसके बाद हम लोग को जाना है कहां पर, ये तो हो गया 1100 और एक ही बाकी था वो है बी। तो बी पे हम लोग को जाना है, तो 110 और उसके बाद 1110 उसके बाद 1, ये हम लोग का हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन है, तो कैसे हम लोग ये ट्री को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट वी विल लर्न in the next lecture. For this lecture, we are restricting us up to this topic. So if you have any comment, you can ask into the comment section. Thank you so much.